Hello student. Now today in this session we will be going to discuss about the accounting treatment related with investment fluctuation reserve. Now first of all, what is investment fluctuation reserve? This is the reserve which is created in order to meet some loss in the value of investment. Okay? If the value of investment goes down, so there will be a certain loss to the company. So this loss can also be met by the firm or the company by creating the reserve that is known as investment fluctuation reserve. ये भी एक रिजर्व है जो फर्म बना सकती है कि अगर फर्म ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर किसी रीजन से कम हो जाती है तो वो जो लॉस होगा इन्वेस्टमेंट या एसेट की वैल्यू कम होने से, तो फर्म कैन रिकवर दैट अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हिच दे हैव क्रिएटेड आउट ऑफ देयर प्रॉफिट. नाउ when this loss will take place, what will happen? When this loss will not take place, then what will happen? How this amount will be distributed amongst the partner when there is a change in the partnership agreement or reconstitution of the partnership. So this amount which is created out of profit will be credited to partners capital oblique current account. So this treatment will be shown how. So today we will be discussing about the accounting treatment related with one more reserve, that is investment fluctuation reserve. I have drafted one numerical for you. On the basis of that numerical we will be going through this explanation. Okay. It is said that A, B and C are partners in the ratio 4:3:2. They decided to share the future profit and loss in the ratio 2:3:4. A, B, C तीन पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ इन फ्यूचर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/19 they have decided to share the profit in the ratio 2:3:4. उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 से हम ये रेशियो बदलेंगे और हमारा नया रेशियो होगा 2:3:4. And on the date that is on 31/3/19, the last day of the previous accounting year, their balance sheet showed few extra. उनकी बैलेंस शीट में कुछ चीजें. On the liability side, they have got an investment fluctuation reserve worth ₹18,000. उनके पास ऑलरेडी investment fluctuation reserve है 18,000 रुपए. Then they have got on asset side investment worth ₹2 lakh at cost. At cost investment जो उन्होंने अभी तक किया है that is valued at ₹2 lakh. Now what will happen? That on the date of change in agreement, that is with effect from 1/4/19 when they want to change the agreement, how we will be showing the accounting treatment related with this reserve, that is 18,000 rupees. जो 18,000 रुपए ऑलरेडी उनकी बुक में था रिजर्व, इस 18,000 रुपए का वो तीनों पार्टनर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. सो देयर आर अगेन कंडीशंस, उसमें फिर कंडीशंस आएंगी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन दे विल डिसाइड दैट व्हाट दे हैव टू डू विद दिस 18,000 रुपीस एंड हाउ दे विल बी शोइंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो फर्स्ट कंडीशन, पहली सिचुएशन आएगी इनके सामने कि when nothing is said, कुछ भी नहीं बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट के वर्थ में कोई चेंज आया है and there is no information related with that thing. And secondly, the worth of investment they are saying that it remains 2 lakh. पहली सिचुएशन में दो बातें. अगर आपको कुछ नहीं बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग में कोई चेंज आया है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट, और दूसरी बात ये बताई गई है कि जो इन्वेस्टमेंट की वर्थ है मान लीजिए वो 2 लाख रुपए ही है, तो उस कंडीशन में भी 2 लाख रुपए है तो देयर इज नो चेंज. सो व्हाट दे विल डू,
Simple, this 18,000 rupees will be divided amongst all the three partner in their whole profit sharing ratio. तो कैसे होगा? It is like this: investment fluctuation reserve account debit to A's capital account to B's capital account and to C's capital account. तीनों पार्टनर को ये क्रेडिट कर दिया जाएगा इन देयर होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 4, 3 and 2. So total worth of investment reserve was 18,000 और 4, 3, 2 means 9 part, 9 2 are 18. तो एक पार्ट 2,000 रुपीस का अगर आप डिवाइड कर देंगे 18 को 9 से, so multiplied like this, that is 2,000 into 4, so 8,000 will go to A, 2,000 into 3, 6,000 will go to B and 2,000 into 2, so 4,000 will go to C. इस तरीके से हम ये 18,000 rupees we will distribute amongst the partner in the condition when it is said that investment is worth rupees 2 lakh only, or if there is no information regarding this matter. दोनों ही सिचुएशन में 18,000 पूरे के पूरे हमने इन तीनों पार्टनर्स को डिवाइड कर दिए. So what it is, the investment fluctuation reserve distributed amongst all partner in the all profit sharing ratio. ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है. Being investment fluctuation reserve distributed to partners in their old profit sharing ratio. Okay, so this is how it will be divided. ये पहली सिचुएशन हो गई. Okay, now after this the next situation, in that what it is said, उन्होंने ये बोला आपको कि that the investment on the date of change in agreement, जिस तारीख को एग्रीमेंट बदला उस दिन इस इन्वेस्टमेंट का वर्थ हो गया 1,91,000. Please listen carefully. 2 lakh rupees investment cost पे on 31/3/19 and the agreement change on this date 1/4/19. So on this date when they have revalued their assets and liabilities, so the investment was showing a value of 1,91,000 rupees. So that means there is a loss of 9,000 rupees. तो इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए से क्या हुआ, कम हो गया. So when the investment is reduced by 9,000 sorry, so what we will do, we will make the use of this 18,000 to compensate that loss. इस 18,000 में से हम 9,000 का वो लॉस क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे. So in the same entry, इसी एंट्री को अगर आगे बढ़ाते हैं तो it will be like this. Investment fluctuation reserve will be debited by 18,000. Then to investment account, the worth of investment is reduced. The assets reduce होएगा. When the assets is reduced or decline, so it should be credited. उतने रुपए से उसको क्रेडिट करना चाहिए. So 9,000 rupees we have credited. हमने 18,000 में से 9,000 इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्रेडिट कर दिए. We have recovered that loss. So now what happened? 18 minus 9, that means remaining 9,000 reserve. So that will be again divided amongst the partner. That is 2
A's capital account to B's capital account and to C's capital account. So now this three partner will divide the remaining 9,000 rupees. अब आपके पास 9,000 बचे, 9 parts, 4, 3 and 2. So 9 parts, 9,000 divided by 9 will make 1,000. So 1,000 into 4, तो A को मिलेंगे 4,000, B को मिलेंगे, he will get 3,000 and C will get 2,000. Okay, in their old profit sharing ratio. Now what will happen? Being the amount of investment adjusted and the remaining reserve distributed amongst the partner in their old profit sharing ratio. हमने investment का जो amount 9,000 का loss we have adjusted and the remaining amount of 9,000 is distributed amongst the three partner in their old profit sharing ratio. Okay, so what it is saying, being the amount investment loss adjusted and remaining reserve transfer to all partners capital account in their old profit sharing ratio. So this is the next situation in which we have seen that investment was reduced by 9,000 rupees. इसकी ओरिजिनल वैल्यू 2,0791 हो गई. तो उस कंडीशन में how we have shown the accounting treatment. Okay, so this is the next situation. Now comes another situation. अब आगे चलें. फिर एक situation कि on the date of reconstitution this investment increased by certain amount of rupees. जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट असेट का अमाउंट कम ही हुआ हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जिस दिन आपने एग्रीमेंट चेंज किया उस दिन इसकी वैल्यू बढ़ गई. तो उस दिन अगर वैल्यू बढ़ गई तो योर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. सो लेट्स से that the amount of investment on the date of change in agreement become 2,18,000. 2,18,000 हो गया. Okay, 2,18,000. So when this investment will become 2,18,000, so what will happen? There will be no effect on this reserve. इस रिजर्व पे अब कोई इफेक्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इसमें से कोई अमाउंट यूज नहीं होगा. तो सिंपल लॉजिक ये हो जाएगा कि ये 18,000 का रिजर्व तीनों पार्टनर को फिर से बढ़ जाएगा एज इट इज इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट नाउ द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,000, जो ये इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए से बढ़ा, इसका क्या होगा? सो ट्रीटमेंट विद द रिवैल्यूएशन. अब यहां पे भी आप इसको रिवैल्यूएशन से ट्रीट करेंगे बिकॉज योर असेट हैज इंक्रीज. आपका असेट बढ़ा है तो आपको 18,000 रुपए का यहाँ पर भी फायदा हो रहा है. यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 18,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से 18,000 का बेनिफिट शो होगा और फिर ये जो 18,000 आया है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से, ये भी तीनों पार्टनर्स को मिलेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो हाउ दे विल बी डूइंग दिस एडजस्टमेंट, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं. You can make a separate entry for 18,000 like in case number 1 what we have done. आप सेपरेटली 18,000 की एंट्री लेकर के बांट दीजिए और फिर बाद में आप जो 18,000 इंक्रीज हम बता रहे हैं यहाँ पर वो आप रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं. तो रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में चलेंगे. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? तो फर्स्ट केस में चलिए मैं आपको बता देता हूँ पूरी. ये 2ABC ये बांट दिया क्या अपन, ये बांट दी हमने उन तीनों को. दिस 18,000 वी हैव डिवाइडेड अमंग्स A, B and C as usual in their old profit sharing ratio 8,000, 6,000 and 4,000 respectively. Okay, so this amount
क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व, रिजर्व से कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, सो सिंपली वी हैव डिवाइडेड दिस अमाउंट 18,000 हियर इन द रेशियो 4, 3 and 2। ये सबसे पहली कंडीशन जो हमने देखी थी उसमें भी यही करा, क्योंकि रिजर्व का अमाउंट यूज नहीं किया। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन हियर, इसके बाद क्या होगा, तो we have said that the value of asset become 2,18,000, so there is an increase in the value of investment by 18,000। in the previous case, इसके जस्ट पहले केस में हमने देखा था कि 191 होगी थी इसकी वैल्यू, so there was a decrease in the value of investment by 9,000। तो when there is a decrease in the asset, we have credited that thing। now there is an increase in the asset, asset बढ़ा, तो जब भी asset बढ़ेगा तो it should be debited। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और ये जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो रीवैल्यूएशन से चलेगा। तो ये 18,000 रुपए का आपका असेट दैट हैज बीन इंक्रीज, तो आपने इसकी एंट्री बना दी ये वाली, दैट इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया इंक्रीज, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज एट द टाइम ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट, सो यू विल गेट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब फर्म को रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा, तो ये 18,000 का प्रॉफिट सारे पार्टनर्स आपस में बांट करके ले जाएंगे। सो देन द सेकंड एंट्री विल बी हियर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's capital account and to C's capital account. Now this 18,000 will be divided in the old profit sharing ratio amongst all these three partners. So ये 18,000 and old ratio 4:3:2, तो again the same concept, 4 तो 2,000 into 4 that is 8,000, 9 parts में बढ़ जाएगा 6,000 and then last one is 4,000 rupees. So this 18,000 is divided amongst all these three partner. Okay. So this is the situation when the value of investment is increasing. जब आपकी investment की value क्या हो रही है, बढ़ रही है, and when this value is increasing, so at that point of time you have to adjust this amount 18,000 reserve as it is without making any changes, distribute this amount to partner. Secondly, the increase in the investment will be recorded through revaluation account, तो उसका treatment revaluation से दिखाएंगे। Whenever the asset increases, it has to be debited and revaluation account will be credited. And lastly, this revaluation profit, because when this will take place, so 18,000 rupees will be gained by the firm on the part of revaluation. So this profit of revaluation of 18,000 will be distributed amongst the old partner in their old profit sharing ratio. So this is the situation when there is an increase in the value of asset. Okay. So these three situations we have discussed here in detail. Okay. So when there is an increase in the value of asset. Next situation. Again the things come. अगली कहानी में the value of investment goes down rapidly, एकदम से नीचे आ जाती है। Let's say the investment value goes down to 1,73,000, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कॉस्ट, ये घटके हो जाती है 173। 173 means 2 lakh minus 173, it will give you a loss of 27,000 rupees। 27,000 का नुकसान, इन्वेस्टमेंट का वर्थ 27,000 कम हो गया, और 27,000 का इन्वेस्टमेंट अगर कम हो गया, सो फॉर रिकवरिंग दैट इन्वेस्टमेंट हमारे पास है सिर्फ रिजर्व के रूप में 18,000 रुपए।
So we have got only 18,000 in the form of reserve. So what will happen? Out of that 27,000, 18,000 will be recovered by us. उसकी रिकवरी हम कर लेंगे और बचे हुए 9,000 की रिकवरी हम नहीं कर पाएंगे. So ultimately that will be treated as a decrease in the value of investment. तो ultimately वो हमारी investment की value क्या करेगा? Decrease करेगा. And when that thing will take place, so again the same concept, that 9,000 rupee now has to be adjusted with the help of the revaluation account, as that will be the actual loss on investment. उससे हमें वाकई में नुकसान होगा. कैसे होगा ये ट्रीटमेंट? ये देखें. ठीक. So how this treatment will take place? We have got a reserve of 18,000 rupees. हमारे पास 18,000 का रिजर्व है. So it is investment fluctuation reserve account debit, that is 18,000 rupees. And what I have said, that the worth of investment goes down to 173. आपका वैल्यू जो है वो 173 पे आ गया. So loss of 27,000 investment reduce. So to investment account, that is 27,000 rupees. So see the difference. 18,000 was the reserve and the value of investment is decreased by 27,000. So ultimately what we will be seeing, that we will be having a certain loss of 9,000 due to the decrease in investment, and that will be again adjusted with the help of the revaluation account. So revaluation account will be debited by 9,000 rupees. क्यों? क्योंकि ये हमारी वैल्यू को एक्चुअल में कम कर रहा है 9,000 रुपए से. So first entry will be this one, that is the worth of investment fluctuation reserve 18,000 is adjusted and remaining 9,000 will be adjusted through revaluation account as a decline in the value of asset. Okay, so this will be in the first entry, and then this 9,000 rupees loss, अब ये loss हो गया, so this will be shared by all the partners in their profit sharing ratio. So how this will take place? That is second entry. In this case, A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to revaluation account. So revaluation is 9,000 rupees. So 9,000 rupees का loss credit और सारे partner debit in their old profit sharing ratio. So 4,000 will be shared by A, 3,000 loss will be given to B, and 2,000 rupees loss will be given to C. So this is how this treatment will be done when the amount of the loss on investment is more than the reserve. So if there is a reserve but loss is more, then the amount of the reserve, that is the maximum amount which we can compensate, we will be adjusting, and the remaining amount will be adjusted through revaluation account. Okay. So this is how we will be showing the accounting treatment in this case. So there are different cases explained to you in this session through one particular numerical. Hope all this thing will make the things very clear related with the accounting treatment of investment fluctuation reserve. Okay. Hope you have understood this thing, and you will try to solve the various numerical based on this investment fluctuation reserve. Thank you and have a nice day.